So, greetings of the day, Jai Swaminarayan. Today in Standard 8th subject Social Science, we will start chapter 4, that is Tribal Societies under the Colonial Rule, that is British Rule. So, talking about British Rule, we have read about Banjaras in previous year. Banjaras are nomadic tribe. नोमैडिक मीन्स ऐसे लोग जो एक जगह नहीं रहते, हर जगह घूमते रहते. दैट इज़ उनका किसी एक जगह पर घर नहीं होता है. दे ऑलवेज ट्रैवल एंड फाइंड फूड एंड शेल्टर फॉर देमसेल्व्स. So, in this chapter, we will learn how the European people, that is, British peoples, exploited our tribal community, that is, India's tribal community. So, starting with when the white skinned Europeans set out to establish their control over territories in other continents, they not only exploited the natural resources of these countries but also justified their claim over the newly acquired lands by calling them their burden. So when Europeans started to rule the other continents, that is जब वो अपनी कंट्री से बाहर आकर दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उन पे रूल करने लगे, तब उन्होंने ना ही सिर्फ और सिर्फ उस जगह को डैमेज किया, दैट इज़ एक्सप्लॉइट किया, पर उस जगह को खुद का भी डिक्लेयर कर दिया. दे डिक्लेयर्ड द प्लेस एज देयर ओन बाय कॉलिंग इट अ burden. Now let's read why they called it a burden. This idea was born from their sense of superiority. They looked at the people of non European countries as barbaric, uncivilized, and ignorant. So, why they claimed the land of their own? This idea of claiming the land of their own was generated by a sense of superiority. Superiority यानी खुद को बड़ा मानना. They considered non-European people, that is, the people who do not belong to Europe, they considered them as inferior, that is, वो खुद को उनसे बड़ा मानते थे. And what do we mean by barbaric? Barbaric is cruel, unsophisticated और primitive. That is, barbaric people यानी जिन्हें कोई भी manners नहीं होते हैं, that is called barbaric. So European countries के जो British rulers थे, they considered Indians tribal community as barbaric. So many intellectuals and writers of the Western societies claimed of the Western societies that was the responsibility of white-skinned people to introduce the non-whites to their civilized way of life and transform those who were living in dark ages or age of ignorance before the arrival of Europeans in their country. So why did they call the land they owned as a burden? उनको तो नवी ज़मीन मिली है, उन्हें तो खुश होना चाहिए, but they called the land as a burden. So why did they did so? Because burden means बोझ. बोझ था उन पर जो इंडिया में जो लोग रहते थे उन्हें सिविलाइज्ड बनाने का, यानी उन्हें मैनर्स सिखाने का वाइट पीपल पे बोझ था. वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू गवर्न द सिविलाइज्ड पीपल देन अनसिविलाइज. दैट इज़, जिन्हें मैनर्स होता है उन्हें हम ईजीली अपने गवर्नमेंट के तरीक़ों से चला सकते हैं रादर देन अनसिविलाइज्ड पीपल. इट वॉज अ बर्डन फॉर देम बिकॉज दे हैव टू टीच देम. इंडिया में जो ऐसे लोग थे जो अभी भी नवी नवी टेक्नोलॉजी या वेज ऑफ लाइफ से इग्नोरेंट थे, उन्हें टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट सिविलाइज्ड वे ऑफ लाइफ लर्न करवाना था. दैट्स वाई दैट वाज अ बर्डन टू द वाइट मैन. दे वांटेड द इंडियन ट्राइब टू लर्न हाउ टू बी civilized and thus this whole concept was known as white man's burden. When the British came face to face with the Adivasis and their ways of life in India, they looked down upon the nomadic and forest dwelling communities. It was in this scenario that the company officials tried to introduce policies and make laws which had far reaching consequences on the lives of tribals in India. Before we studied about these developments, let us find out how the tribal societies traditionally lived. So
जब ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, इंडिया के आदिवासीज को, दे वर शॉक्ड टू लर्न दैट पीपल स्टिल लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड dwelled ऑन फॉरेस्ट, दैट इज़ वो फॉरेस्ट में ही यानी जंगल में ही अपना घर बनाते थे और वहीं रहते थे. सो वी कॉल दैट ट्राइब एज नोमैडिक पीपल. नोमैडिक पीपल मीन्स जो पीपल का एक जगह पर घर नहीं होता है एंड दे ट्रैवल इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. सिमिलरली फॉरेस्ट डेलिंग यानी जो सिर्फ फॉरेस्ट में ही रहते हैं और वहाँ से कारपेंटरिंग या फिर फ्रूट सेलिंग ये सब बिजनेस कर करके दे अर्न मनी फॉर फूड एंड शेल्टर. They were shocked to find out that people still live in forest, and to improve the lifestyle of Indian people, Indian tribal people, they imposed the laws which had far reaching consequences. Consequences यानी result, far reaching consequences. That means अगर वो अभी से लॉ स्टार्ट करेंगे सो उस लॉ को अप्लाई होने में काफ़ी वक्त लगेगा. दैट इज़ जो हमें रिज़ल्ट मिलेंगे वो काफ़ी समय के बाद मिलेंगे. राइट. नाउ बिफोर लर्निंग कि वाइट पीपल ने इंडिया में आके क्या क्या चेंज किया, वी शुड लर्न दैट इंडिया में चीज़ें पहले किस तरह से थीं. सो गोइंग अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़. You have already read in the earlier grades that tribal communities were different from the caste-based communities and had less stringent social divisions. So, India also had two communities, that is, tribal community and caste community. Caste community had many divisions, जैसे कि Hindu, Muslim, Sikh, Isai, that had many divisions. Unlike tribal people only had one division, that was tribal. So what exactly do we mean by tribal society? Tribal means the people who are nomadic and forest living, जो सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं और फूड एंड शेल्टर की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. Different tribal communities practiced a variety of activities, earned their livelihoods through shifting cultivation, hunting, gathering, herding animals, etc. So I read that stringent social division. Stringent means strict. ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं था. उनकी सिर्फ एक ही कम्युनिटी थी दैट वी आर नोइंग एज ट्राइबल कम्युनिटी. सो हाउ डिड दे अर्न मनी और हाउ डिड दे अर्न फूड? दैट इज़ बाय शिफ्टिंग कल्टिवेशन, hunting, gathering, herding animals, etc. Many tribal communities of North, East and Central India practiced jhum cultivation, that is slash and burn agriculture. In this, a small patch of forest land was cleared by cutting down the trees and burning the vegetation. After harvesting one crop, the communities would move to another area. Such kind of practices required free movement of these communities in forests. So what is shifting cultivation or zoom cultivation or slash and burn cultivation? These three are synonyms for zoom cultivation. So what exactly is zoom cultivation? Zoom cultivation means कि आप एक जगह पे फॉरेस्ट में हो और उस फॉरेस्ट को आपने कट कर दिया एंड देन यू बर्न इट एंड देन यू ग्रो वेजिटेबल्स देयर, दैट इज़ योर क्रॉप. And then after the crop is fully grown, you harvest the crop and again burn the land and move to the next place. That is, after cultivation of one crop, tribal communities moved to other place to grow different crops and sell them to earn money that will buy them food and shelter. Now, the hunter-gatherer tribal communities lived on forest produce. They collected seeds of mahua and sal and extracted oil for cooking. They hunted animals in groups and shared their catch with the community. So first we learned about how the cultivation community lived. That is by going to different places and cultivating crop over there. Now we are learning about how the hunter-gatherer tribal communities lived.
So they collected seeds of different plants, and by selling the seeds they earned money, which led to food and shelter. Or either they will hunt the animals which are edible and share with their friends and family. They, la- they largely remained societies whose economic activities revolved mainly around producing goods for self consumption. दैट इज़ जो वो खाना बनाते थे या उगाते थे, या वो सीड्स जो कलेक्ट करते थे, या फिर वो एनिमल्स हंट करते थे, वो सारे एनिमल्स, सीड्स एंड क्रॉप्स वो किसके लिए होते थे? उनके खुद के लिए, दैट इज़ फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन. The Khond Adivasis of Odisha practiced such a lifestyle. They would also sell some of the forest produce as herbs and shrubs for medicinal purposes in local haats. जो लोकल हार्ट्स थे, हार्ट्स मीन्स लोकल कम्युनिटी, वो उनसे हर्ब्स एंड श्रब्स खरीदे थे in the form of medicine. It is from these weekly or monthly markets they purchased goods which they could not obtain from forests. There were other groups such as Gadis of Himachal Pradesh and Bakarwal of Kashmir, whose primary occupation was herding and animal rearing. So, जब भी उन्हें कुछ ऐसे गुड्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती थी विच दे कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, सो दे वुड गो एंड बाय दोज थिंग्स फ्रॉम वीकली और मंथली मार्केट्स, यानी ऐसे मार्केट्स जो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ही लगते थे. एंड देर आर अदर ग्रुप्स, these ट्राइबल ग्रुप्स में भी अलग अलग कम्युनिटी थी विदाउट स्ट्रिक्ट सोशल डिविजन, एंड दोज ग्रुप्स वर गाड़ीज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड बाकरवाल ऑफ कश्मीर. There were other tribal groups such as Gonards and Santhals which practiced settled agriculture. They often practiced agriculture on the land that was collectively held by communities, and the produce was shared among all. In many communities, people also appointed or elected tribal chiefs. So, communities like Gonards and Santhals, what did they do? They live off of सेटल्ड एग्रीकल्चर, दैट इज़ जो सेटल्ड कम्युनिटी थी यानी जो नोमैडिक नहीं थी, दैट आर नॉन नोमैडिक पीपल, वो उनसे लैंड लेते थे एंड देन दे ग्रो क्रॉप्स ऑन इट, एंड द क्रॉप्स वर शेयर्ड बिटवीन द ट्राइबल कम्युनिटी एंड द सेटल्ड कम्युनिटी. दैट इज़ वो उनकी ज़मीन से, उनकी मेहनत से क्रॉप्स उगाते थे. जो ज़मीन सेटल्ड लोगों की थी उन्हें वो बदले में क्रॉप्स देते थे, और क्रॉप्स के बदले में सेटल्ड कम्युनिटी ट्राइबल पीपल को अपना लैंड देती थी. ऑलराइट, नाउ अटेम्प्ट टू अल्टर ट्राइबल सोसाइटीज़. नाउ लेट्स रीड अबाउट हाउ द ब्रिटिश पीपल अटेम्प्टेड टू अल्टर द ट्राइबल सोसाइटीज़. दैट इज़ जिस तरह से ट्राइबल लोग रह रहे थे, ब्रिटिशर्स केम एंड ट्राइड टू अल्टर दैट. अल्टर यानी टू मेक अ चेंज. Now, when the British first came to in direct contact with the tribal societies and their ways of life, they considered them primitive. Primitive means very minute, very minor. They were not comfortable with the nomadic ways of life of some of the tribals, for this made the task of administration and controlling people difficult. A settled community was always easy to govern and control as compared to the ones that moved from one place to another. Another aspect of life concern was that they could levy tax on people who practiced settled agriculture. As a result, they introduced land settlement systems in which they measured the land, assessed the quality of produce, and fixed the share of revenue. So now British people came from Europe to India. They were worried about how they will rule the tribal community, because ट्राइबल कम्युनिटी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी. सो इट वॉज़ वेरी हार्ड टू एडमिनिस्टर देम. दैट इज़ जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड टू एडमिनिस्टर देम.
unless of the people who are settled. जैसे कि अगर हमें किसी को रूल करना है, किसी के ऊपर रूल करना है, उन्हें एडमिनिस्टर करना है, so what we will do, we will firstly settle the people all around which we want to rule in a one place. So thus it is very easy to administer the people who are settled. And another of their concern was about tax, about revenue of the land. It was their thought to collect revenue from the people who performed settled agriculture. दैट इज़ जो लोग अपनी खुद की ज़मीन पर क्रॉप्स उगाते थे उनसे वो रेवेन्यू ले सकते थे, अनलाइक ट्राइबल कम्युनिटी जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर फॉरेस्ट में झूम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे, उनसे वो लैंड रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर सकते थे. इसीलिए ब्रिटिश पीपल ने क्या किया, उन्होंने एक लॉ एनफोर्स किया जिसमें उन्होंने लैंड सेटलमेंट की अलग अलग स्कीम्स बताई और ट्राइबल कम्युनिटी को कन्विंस किया कि आप झूम कल्टीवेशन छोड़ के सेटल्ड एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करें. The British also meddled with the structure of tribal societies. The tribal chiefs, who enjoyed considerable autonomy before the arrival of British, were forced to give up certain rights and powers over their communities due to newly made laws. The British people also meddled. Meddled means खिलवाड़ करना. They damaged, they played with the structure of tribal societies. द ट्राइबल चीफ्स, जो ट्राइबल कम्युनिटी के भी हेड थे, उनके जो पावर्स थे, जो राइट्स थे, दे हैड टू गिव अप दैट बिकॉज दे वर फोर्स्ड इनटू दैट. Britishers forced the tribal chief to give up his power and rights. Now what do you mean by autonomy? Autonomy is एक ही इंसान का किसी कम्युनिटी पे राज करना. That is what autonomy is. That is what was enjoyed by tribal chiefs, but they had to give up autonomy upon arrival of Britishers. Another area in which the British attempted to expand their control was the forest. They declared forest as state property, imposed certain restrictions on using forest produce, and made new forest laws. They set up a forest department in the government. This directly affected the lives of those who were greatly dependent on forest produce for their survival. For example, some forests were declared reserved so that the timber produced from these forests could be used by the government. However, this posed another challenge on the British. If there were no laborers living in the forests who would cut the trees and provide timber, as a solution, the officials set up some villages inside the forest and allowed some communities to practice jhum cultivation. This ensured a regular supply of cheap labor. Now, another area in which British people were concerned was control of forests. So British peoples were now concerned about forests. ये अगर ये लोग यानी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो अगर फॉरेस्ट में अपना एग्रीकल्चर कंटिन्यू करेंगे, सो हाउ विल दे रिजर्व टिम्बर फॉर यूरोप, बिकॉज जो टिम्बर की जो डिमांड थी यूरोप में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी. एंड नाउ दे वांटेड टू कल्टिवेट टिम्बर ओनली टू एक्सपोर्ट. सो इफ़ दे रेस्ट्रिक्टेड द फॉरेस्ट एरियाज़, अगर वो फॉरेस्ट एरिया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिज़र्व कर देते हैं, तो उन्हें जो लेबर है, जो फार्मर्स है, जो उन्हें कल्टीवेशन के लिए चाहिए, वो कैसे मिलेंगे. सो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे allowed some of the villagers to work in the forest and continue practice of jhum cultivation. They allowed some of the villagers, यानी उन्होंने कुछ villagers को अलाउ किया फॉरेस्ट में रहकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जो उनका नीड है कल्टीवेशन का ऑफ टिम्बर वो कंप्लीट हो सके. एंड दिस इज़ हाउ Britishers played a role in reserving forests for themselves and also forest goods. Now we will learn how the tribal community rebelled to the British people, to the British rulers in next lecture or next video. Thank you.